फाइनली भाई ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ. वी विल सी दैट L&T just announced the trainee software engineer role. Deloitte also announced the big analyst role. EY is also announced the trainee software engineer role. Even Hitachi is also announced the associate software engineer role. तो भाई ये किस टाइप की वीडियो? This is the amazing video for you. These are the big giant companies and the role is absolutely for entry level. This is just for freshers opportunity. Please यार please एक बार मेरी बात मान लो. Please watch video till end and please it hardly take 2 seconds to subscribe my channel, like this video. Please this give me motivation. So please watch video till end. Please watch video till end because बहुत बड़ी हायरिंग होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यहाँ से शॉर्टलिस्टिंग मेल ना आए. Please watch video that because I want to tell you the shortlisting, the domain, what to add in resume and what is the batches because criteria is not mentioned. ठीक है, तो please एक बार देख लो अच्छे से. First, I want to tell you L&T Construction just announced the biggest hiring junior engineering trainee 2026 role is out. If you see 2026 batch is eligible final year semester student in diploma course, 60% criteria in SSC, 60% aggregate marks in diploma. Now, candidate who have passed all examination in first attempt not appear in the regular semester for reason will be treated even if subsequently cleared है. ठीक है, ये समझ लेना तुम. नॉट मोर देन 23 ईयर्स एज 1 जनवरी 2026. नाउ दीज आर द हाइट वगैरह पता नहीं क्यों मांगा है बट दिस इज द मास हायरिंग फॉर यू. जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड फिल दिस. इफ यू आर अ डिप्लोमा स्टूडेंट फिल पर्सनल डिटेल एजुकेशन डिटेल्स एंड अपडेटेड रेज्यूमे यू हैव टू गिव एंड चेक बॉक्स ऑल 3 points and please submit it as soon as possible. So what is the mode of study? You have to click on full time. Now college name, college type, state you have to give college type, it must be private or government जो भी है तुम्हारा, and gender you have to give email ID, domain, district you have to give your photo, passport size photograph. Basically this is the trainee role in the construction L&T field. That's why they are asking you about age और medical standards और glasses, मतलब तुम्हारे glasses का नंबर क्या है ये वगैरह वगैरह. So fill this form as soon as possible. This is for diploma students. Second mass hiring just announced Hitachi Vantara associate software engineering role. Just scroll down, click on apply now. Before that you have to update your resume. Now what to put in resume? Check out this thing. First level application development position. ठीक है, and the thing is unit testing, automation, manual testing you have to put in resume. You have to put QA support in resume. Proper documentation you have to put in resume and interpersonal skills plus development methodology means SDLC. Now basic technical issue troubleshooting you have to put because this is support role. ठीक है, this is a type of support role. Pune location is there, request ID is there. You can easily take reference from LinkedIn. But in my opinion you have to, but in my suggestion you have to apply manually because this is limited time opportunity. Put all these domain which is written here. This is absolutely IT role but tech support related. ठीक है, documentation काफी चीजें यहाँ पे रहेंगी. So please fill this form as soon as possible. Click on apply now. Don't miss this hiring. Don't skip this hiring. Hit the apply button. But before that you have to update your resume. What to put already यहाँ पे हर चीज लिखी है. एप्लीकेशन डेवलपमेंट तक लिखी है. यहाँ पे तुम जावा भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो. यहाँ पे डीबग टेस्ट करना, कोड करना, इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. प्योर IT रोल है भाई. इसके लिए तुम्हें GitHub, एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रंट एंड बैक एंड, डेटाबेस, कंटेनराइजेशन ये सब ऐड करना है. यहाँ पे लिखा नहीं है ये बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही है तुम्हारी. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू प्लीज वॉच वीडियो टिल एंड बिकॉज जो चीजें तुम्हें नहीं पता वो मैं तुम्हें एज इट इज बताता हूँ एंड दिस विल सेव योर टाइम. ठीक है, प्लीज वॉच वीडियो टिल एंड. सो अप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल. व्हाट आई टोल्ड यू, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन इज कंपल्सरी टू पुट इन रेज्यूमे एंड गेट द शॉर्टलिस्टिंग मेल. क्लिक ऑन अप्लाई नाउ. Second mass hiring I want to tell you about associate software engineering by EY. अब तुम देख सकते हो किस टाइप की लेवल की अपॉर्चुनिटीज में लाया हूँ, तो लाइक तो कर ही देना. नाउ स्क्रॉल डाउन एंड चेक आउट दैट BE BTech in computer science, IT, software engineering, even circuit branches, all circuit branches is eligible. 60% throughout is compulsory. No active backlog. Now this is pure IT role. Again, one programming plus data analytics, Excel, Power BI, Tableau, databases, SQL, MongoDB, mostly PostgreSQL और MySQL वगैरह तुम कर सकते हो. Now SDLC और STLC, ठीक है, ये सब आना चाहिए. If you having internship, this will be added advantage but not mandatory. Now put all these domain which is interpersonal skills. Now plus IT plus interpersonal skills हो गया तुम्हारा काम यहाँ पे. नाउ रीड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं बट वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक द जॉब ID, टेक द रेफरल फ्रॉम द लिंक्डइन एंड दिस इज द बेंगलोर लोकेशन. तो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल इज देयर. टेक योर रेफरल बिकॉज दिस विल गिव यू बेनिफिट. इसके लिए रेफरल ले सकते हो, मे बी ये एक दिन ओपन रहे.
आज देख लो, 1-2 घंटे में रेफरल मिल गया तो मिल गया, नहीं तो अपना मैनुअली अप्लाई कर लेना। एंड प्लीज अपडेट योर रेज्यूमे बिकॉज इफ यू आर टेकिंग रेफरल यू हैव टू गिव द एम्प्लॉय टू योर अपडेटेड रेज्यूमे। तो अपडेटिंग रेज्यूमे इज मैंडेटरी, तो अप्लाई इट मैनुअली एज सून एज पॉसिबल। Another big giant company, Deloitte announced associate analyst Hyderabad location is there. Now scroll down and check it. That bachelor degree postgraduate degree 0 to 5 year to 2 year of relevant experience is needed. Now the thing is onboarding and background check environment. अब इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा देता हूँ। The first thing, interpersonal skill is compulsory. This role require high level of attention to detail, taking responsibility for multiple action and activities within tight deadlines. This role required the incumbent to maintain strict confidentiality regarding the process. इसका मतलब यही है कि preferably in onboarding and background check, it means you have to book the interview of the candidate, you have to select the resume। मतलब ये जो होता है ना कि resume shortlisting से लेके ऑफर लेटर ज्वाइनिंग तक का जो HR देखता है उस लेवल का रोल होने वाला है। That's why you have to check each and everything, multiple action activity, tight deadlines must be there। एंड यहाँ पे वही चीज़ें हैं, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो एक्सेल आउटलुक कर सकते हो ऑन द बेसिक लेवल बिकॉज गुड नॉलेज इज कंपलसरी ओनली, नॉट इंटरमीडिएट और एडवांस। हैदराबाद लोकेशन इज देयर। नाउ द मेन थिंग, ये तो हमने तुम्हारी रिक्वायर्ड स्किल बता दी। अब यहाँ से हम इतने सारे डोमेन निकाल सकते हैं कि क्या ही बोलूँ मैं। यहाँ ट्रबल शूटिंग मिलेगा, ठीक है, एंड इफ यू रीड मैनी मोर डोमेन इज रिटन देयर, यू कैन easily take help from ChatGPT that put all these responsibilities or required skill and tell them give me the industrial domain for this role and for these responsibilities। तो वो ऐसा तुम्हें डोमेन देगा, then you can easily apply and after that you will see the shortlisting mail। Now if you scroll down, the thing is here is also the request ID। What you have to do, take referral for Deloitte, for EY, only for Deloitte और EY के लिए ले लो referral and click on apply now। But before that you have to update your resume। और for Hitachi don't take referral because मेरे हिसाब से ये बहुत जल्दी बंद होने वाली है। And for L&T, if you see there is no job ID, that's why you have to apply manually। So don't waste your time and hit the apply button because junior engineer trainee role is there, officially hiring है, ठीक है। Another official hiring, Hitachi associate software engineer fresher is eligible। Now what are the batches? 26 is eligible for this। Now for Hitachi all grades is eligible, 23, 24, 25। For Deloitte 23, 24, 25 again, even 22, 21 is eligible। For EY if you scroll down, what do we see that this is a fresher level of hiring। So if you are from 26 or 25, 24 you can easily apply। So what you have to do, Bangalore location, multiple location opportunity, I told you multiple hiring plus all fresher opportunity plus experience if you have, you can also apply। What you have to do, just go to the video section, check out the more video I uploaded yesterday, go and check these opportunities, like these videos, do subscribe my channel and please watch video till end to get the fully knowledge, apply that domain in resume, take referral और either take manually apply। ठीक है, ये दो चीजें होती है जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ and I already told you in detail everything in each and every opportunities, each and every hirings, I always told you about these things। But the thing is you have to watch video till end, otherwise you will never get to see what I told you because you are skipping in 10 second, 5 second or mid of the video, then how you know what I told you and how to get the resume shortlisting। So please watch videos till end, channel subscribe कर दो, like जरूर करना वीडियो को। Thanks for watching।